Welcome to Knowledge Enzyme. Today we'll discuss correct use of verb of present perfect continuous tense. What type of action this tense describes? Let's look at this picture. This is the picture of a family. They are going to be late as they are waiting for the bus for last 20 minutes at the bus stop. They are still waiting because the bus has not come. तो ऐसा एक्शन जिसमें वो पिछले 20 मिनट से गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं और गाड़ी अभी तक नहीं आई है, तो ऐसे एक्शन को हम बयान करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. तो व्हाट टाइप ऑफ एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब्स? It indicates an action that begins in the past and still continuing. यानी ऐसा एक्शन जो माजी में शुरू किया गया और वो अभी भी जारी हो, तो ऐसे एक्शन को बयान करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. We'll understand it through an example. He has been playing cricket for last 2 hours. वो पिछले 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है. It means he started playing in the past and still playing. In these sentences, since and for is commonly used. Since और for प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, which shows the time. And now we understand this sentence through a timeline sketch. The action like playing started in the past and the action was not completed and still continue. Then this type of an action which started in the past and did not complete and continued action will be represented in present perfect continuous tense. The action started in the past and the action did not complete and still continuing action will be described in present perfect continuous tense. Now we see what type of helping verb and verb will be used in present perfect continuous tense. We use has been, have been and first form ing. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हैज़ बीन और हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे. वी विल सी एंड अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जाम्पल. शी डैश सिंस मॉर्निंग, इज स्लीपिंग, हैज़ स्लेप्ट, हैज़ बीन स्लीपिंग, स्लीप्स. इफ वी लुक एट दिस सेंटेंस, फिक्रे में सिंस मौजूद है. दिस शोज दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस. And in present perfect continuous sentence we use has been, have been and first form ing. So the right option will be has been sleeping. Now if the sentence has been, have been, already has been, have been फिक्रे में मौजूद है, तो then we use only first form and ing. Now we understand it with an example. They have been dash for the bus for 20 minutes. Wait, waiting, waited, waits. फिक्रे में have been पहले से मौजूद है, तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ing इस्तेमाल करेंगे. तो the right option will be waiting. Now we'll see some exceptions. Some of the verbs that are static verbs, we will not use continuous form with them. Generally we will not use ing form with static verbs. What are the static verbs? The verbs which are not related with emotions. Like the verbs which are related with emotions are dynamic verbs like eat, drink, play. They are related with emotions, are related with the dynamics. So the verbs which not related with the emotions, they are called static verbs. These verbs are see, hear, smell, taste, feel, notice, want, appear, need, absent, hope, know, like, understand, suppose, agree, mind, etc. These verbs are not related with the motion. यानी ऐसे verbs जिनका ताल्लुक हरकत से ना हो, तो इस तरह के एक्शन को हम स्टैटिक वर्ब्स कहते हैं और हम इन वर्ब के साथ ing फॉर्म को इस्तेमाल नहीं करते. इनको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं किया जाता. तो इस तरह के वर्ब्स
को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करने की बजाय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट दिस इज एग्जाम्पल, आई डैश हिम सिंस संडे, am not seeing, have not seen, have not been seeing, will not see. Since shows that it is present perfect continuous tense, but the verb see is a static verb, and static verbs will not use ing form of the static verbs. So we will not use it in present perfect continuous tense. Instead of this, we will use present perfect tense. And in present perfect tense, we use has, have, and third form. The right option will be have not seen. Now we see the use of since and for. For will be used to indicate the period and duration of time, but not exact time. फॉर का इस्तेमाल वक्त के दुरानिए को जाहिर करने के लिए जो वक्त ख़ास नहीं होता है, और ऐसे काम यानी जो कि जारी है, माजी में जो काम जारी है उसको जाहिर करने के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे वक्त जैसे सेकेंड, मिनट और डे, वीक, मंथ, ईयर, तो सेंचुरी, ये इस तरह के वक्त हैं जो कि ख़ास नहीं हैं, और वो ख़ास वक्त ना हो तो उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। हम अब देखते हैं कि सिंस का इस्तेमाल हमने कहाँ पर करना है। सिंस इज़ यूज टू इंडिकेट द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द एक्शन बिगिन। माजी में जो ख़ास वक्त में काम शुरू हुआ है उसको जाहिर करने के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। सिंस को हम इस्तेमाल करने के लिए हम देखते हैं कि किस वक्त के साथ हमने सिंस इस्तेमाल करना है। जैसे ओ क्लॉक, डे ऑफ टाइम, दिन का कोई वक्त, मॉर्निंग, सुबह का वक्त, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, नेम ऑफ द डे, मंथ, नेम महीने का नाम, ईयर नेम, साल का नाम, चाइल्डहुड बचपन, यूथ, जवानी. These are the specific time, and with the specific time we use since. Now, after understanding the use of these identification, correct use of verb and helping verb, we'll see some examples. We see the example number 1. She dash English for 2 months. For shows that is present perfect, and with the present perfect tense we use has been, have been. So the right option will be has been speaking. Now we'll move towards option number 2. I dash the lesson for 3 hours. For shows that it is present perfect continuous tense, and with present perfect continuous tense we use have been and has been and first form ing. So the right option will be have been learning. Now we go towards the third. She has dash for 1 hour. Sentence में has पहले से है. For shows that it is present perfect continuous tense और has पहले से मौजूद है, तो हम has के बाद been और ing फॉली फॉर्म जो करेक्ट ऑप्शन है देखते हैं कि this will be the right option. Now we'll move towards the fourth one. I dash you for 5 years. The options are have been knowing, knew, are knowing, have known. Know is the static verbs, or with the static verbs it is not generally used ing form with them. So it is better to use present perfect tense instead of present perfect continuous tense. इनके साथ present perfect tense को इस्तेमाल करते हैं बजाय इसके कि present perfect continuous tense का इस्तेमाल किया जाए, अगरचे उसमें present perfect continuous tense की पहचान भी मौजूद है। तो हम यहाँ पर present perfect जो है वो ऑप्शन दुरुस्त होगी have known. इन फ़िक्रात को एग्जाम्पल्स को देखकर और इनके आइडेंटिफिकेशंस और हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल करना है और फॉर्म कौन सी इस्तेमाल करनी है आपको इसकी समझ आ गई होगी. एंड होपफुली यू अंडरस्टूड दिस. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. अल्लाह हाफिज़.